गणराजेन रक्षितोऽहम् गणराजेन रक्षितोऽहं गणराजेन रक्षितोऽहं गणराजेन रक्षितोऽहं गणराजेन रक्षितोऽहं गुणिजननुतपल्लवपदेन गणराजेन रक्षितोऽहं गुणिजननुतपल्लवपदेन गणराजेन रक्षितोऽहं मणिमण्डितचारुनिटिलेन गुणिजननुतपल्लवपदेन गणराजेन रक्षितोऽहं मणिमण्डितचारुनिटिलेन गुणिजननुतपल्लवपदेन गणराजेन अणिमाद्यष्टसिद्धिप्रदेन अणिमाद्यष्टसिद्धिप्रदेन माणिक्य मकुटादिधरेण अणिमाद्यष्टसिद्धिप्रदेन माणिक्य मकुटादिधरेण मन्त्रिणी पूजित सुमुखेन मन्त्रिणी पूजित सुमुखेन मानित गुरुगुह वन्दितेन मन्त्रिणी पूजित सुमुखेन मानित गुरुगुह वन्दितेन दिनकरकोटिप्रकाशेन दिनकरकोटिप्रकाशेन विनताश्रितमन्दारेण मनुपूजितपाशकुशेन कानलसितब्रह्मचर्येण गणराजेन दिनकरकोटिप्रकाशेन विनताश्रितमन्दारेण मनुपूजितपाशकुशेन कानलसितब्रह्मचर्येण गणराजेन रक्षितोऽहं मणिमण्डितचारुनिटिलेन गुणिजननुतपल्लवपदेन गणराजेन The print Ganapati from the Ravi Varma press, which is derived from a painting by Raja Ravi Varma, beautifully resonates with the description in Muthuswami Dikshitar's Tritiya Vibhakti Kriti Ganarajena Rakshitoham in Raga Arabhi and Mishra Chaputala. The vibrant Visheshanas described in the Kriti like Mani Mandita Charu Nitilena, meaning the one who is adorned by a beautiful pearl ornamented forehead, translate seamlessly with the picture. Another phrase, Manikya Makutadi Dharena, meaning the one who wears a crown of precious stones and gems. Dinakara Koti Prakashena and Sumukhena, meaning the one who shines as bright as a crore suns and the one who has an enchanting face, are also wonderfully depicted in the picture.